Okay, now meeting is in recording mode. Uh, let's take a revision of the yesterday's session. Actually, we have taken the different types of operators. Which type of operator we have seen? Very first one is we have seen the arithmetic operators. Then after that we have seen the different types of logical operator. Then we have seen as the relational operator. Relational operator we have seen, and then after that I think which operator we have seen? Okay, have you seen the bitwise operators? String, I think we have seen string. Okay, and the string function. Okay, bitwise operator is remaining. Okay, so I've forgotten to actually take that bitwise operator. Quickly, we will revise about the bitwise operator. Bitwise operator. It is very important. If you are electronic students or the computer student, for the electronic student, these operators are very important one. So just be attention here. What do you mean bitwise operator? So what happened when you are operating, when you are using this bitwise operator, whatever you are actually variables are there, that is operated bitwisely. Now what do you mean by bitwisely operated? So we'll see here. For example, there is a variable a is equal to 10, and there is a variable b is equal to suppose 12. A is 10 and b is 12. A is 10 and b is 12. So what happened actually? A is 10 and b is 12, and if you want to operate this as a bitwisely, so what are the different bitwise operator? First we will quickly see. Very first operator, bitwise operator, is an AND operator. The second operator is the OR operator. This is the AND operator. This is the OR operator. And the next one is the XOR operator. This is known as a XOR operator. And this is known as a complement operator. This is known as a complement operator. Okay. So we will see actually what is the AND operator, how the AND operator works, how the OR operator works, and how the XOR operator works. Let's take the example of these two, A and B. If value of A is 10 and the value of B is 12, then, and if I'm using this C is equal to A and B, if C is equal to A and B, can you able to calculate the value of C? Can you able to calculate the value of C? A and B, if you are operating if you are using this expression A and B, and you need to calculate C. So what is the answer? Yeah, 120, 1000. Yeah, just calculate yourself and first tell me. Then I will do the calculation how it is get calculated A and B. 120, 120. Okay, most of the people are saying 120. The remaining are saying, one is saying 22, one is saying 8, one is saying 120, and 1012, 1012. Okay, 8. Okay, so let's calculate it. So as I have mentioned here, actually, if you are doing the AND operation, what is the AND operation? AND operation means that truth table of the AND we have seen actually. It is not a multiplication. AND is nothing. It is not a multiplication. AND is the actually logical AND. Logical AND, we know that the truth table is, if suppose if the X and Y, these are the two inputs. If first input is X, second input is Y, and if it is 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So what is the X and Y? If X and Y is there, 0 and 0, the result is 0, 0 and 1, the result is 0, 1 and 0, the result is 0, and 1 and 1, the result is 1. So what you need to do to calculate the result of this expression, actually you need to convert this particular the integer value into the binary value. Then after that you need to perform the AND operation. You don't directly do the direct multiplication. So
here a is equal to 10, so it is an integer, so you need to convert into the binary format. So binary means 1 2 4 8, so 10 means 1010. Okay, so it is 1010, it is a. And b is equal to 20. I think b is 20 tha na? B is equal to b is 12, I think b is 12. Okay, so if b is equal to 12, then 8 4 2 1, so what is 12? 1 1 0 0. Okay, 1 1 0 0, and you need to do the AND operation. Now according to the truth table, tell me what if I'm doing 0 ending with 0, what is the result? 0 ending with the 0, it is 0. 1 ending with the 0, the result is 0. 0 ending with the 1, the result is 0, and the 1 ending with the 1, the result is 1. Now this is your C. So convert this binary into the decimal, it becomes 8. So what is the correct answer? The correct answer is 8. Okay, so it is not 1200, it is not 1200. Okay, it is not 1200, so the answer is 8. So have you got it? If you are getting, just type got it. So remember that if one of this operator, AND operator, OR operator, XOR operator, and the complement operator is come in between the two operand, what you need to do, you have to convert that variables or the operand into the binary, and then you have to perform the operation. It doesn't mean that actually in your academics, while learning the and or, you always say that अभी and कैसे सिखाते हैं academic में, and what is the and is nothing but the multiplication of the two inputs. Now multiplication is different operation, it is a different operation, but actually if it is 0 0 0 1 1 0 and 1 1, it will treat as a multiplication. Your output is treated as a multiplication. 0 multiplied by 0 0, 0 multiplied by the 1 0, 1 multiplied by the 0 0, and 1 multiplied by the 1 1. Okay, in this way you are learning that it is and is nothing but your multiplication, but never answer this question and is the multiplication, because and operation is the different operation, multiplication operation is the different operation. And again there is a myth that or is nothing but your addition. Or is not my addition, or is the oring, and is ending. Got it? So we'll quickly take one example. Suppose if a is equal to 8 and b is equal to suppose 12. If a is equal to 8 and b is equal to 12, first answer, who tell me what is the answer of a and b? What is the answer of a or b? While giving you answer, just type a and b equal to this and a or b equal to this. First do some calculation. Okay, directly don't throw the answer. A multiply, Omkar, a multiply, don't write a multiply b. A and b, and operation and the multiply operation both are different. If you are going for interview, any electronics company interview, and if they are asking what is the AND operation, and if you are saying multiply, then they will directly reject you. AND is nothing but, AND is not a multiplication operation. ANDing is just a logical ANDing. Okay, let's see the actually answer. A and B. A is 8 means 1000, and B means 8 means 1100. Okay, so first we will do AND operation. 0 and 0 0, 0 and 0 0, 0 and 1 it is 0, and 1 and 1 it is 1. So answer is 8.
Answer is 1 0 0 0. That is answer is 8. And what is the A or B? If you are doing A or B, or do you know the truth table of OR? Actually, we have seen yesterday itself. 0 or 0 0, it is 1 and 1 and 1. If both inputs are false, then only the result is false. Okay, so quickly we will see the actually result. 0 or 0 0, 0 or 0 0, 0 or 1, it is 1, and 1 and 1 or 1 is 1. 1 or 1 is also 1. So 1 1 0 0, 1 1 0 0 means 12. So the answer is 12. So got it? Okay, so okay, you are getting that AND operator as well as the OR operator. Now the next operator is the XOR operator. XOR operator. Now XOR operator is very similar that you are learning in your digital electronics. XOR operator. First we will see the truth table X, Y, and the X XOR Y. 0 0 0 1 1 0 1 1. These are the possible combination of the bits. 0 XOR 0, the result is 0. 0 XOR 1, the result is 1. 1 XOR 0, the result is 1, and 1 XOR 1, result is 0. Got it? So how to remember it? It is a very simple technique to remember it. If both inputs are 0, not 0, if both inputs are same, then the output is 0. देखो, अगर दोनों इनपुट अगर सेम होते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा. लेकिन बोथ इनपुट अगर आप डिफरेंट होते हैं तो यू विल गेट आउटपुट एज 1. You will get output as 1. Got it? So just take one example. If A is equal to 20 and B, if A is equal to 22 and B is equal to 22, so what is the answer of A XOR B? Can anybody tell me what is the answer of A XOR B? Yeah, no need to convert that A and B into the binary. Directly both inputs are same. If the both inputs are same and if you are doing XOR operation, directly you can put the result is 0. Okay, जिसको पता है ना वो तुरंत आंसर देगा, जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा? सबसे पहले 22 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, उसके बाद में 22 कन्वर्ट करेगा फिर से बाइनरी में, फिर एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. इट विल टेक 1 or 2 minutes. लेकिन याद कैसे रखना है? अगर बोथ इनपुट्स अगर सेम है तो आउटपुट 0 होता है. ओके, लेकिन अगर बोथ इनपुट सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अभी क्या करना पड़ेगा? If A is 22, B is 18, then what need to do? That is answer. Answer is not 1. We need to calculate. So how to calculate? 1, 2, 4, 8. We need to first convert that 22 into the. We need to convert that 22 into the binary. So what is 22? Again 16 we need. So 16. And then how many remaining? 6. 6 means 4 plus 2. So it is 0. This is my 22. Next one is 18. So how to get the 18? 16 and 2, it is 0. Okay, so it is 18. So just perform the XOR operation here. 0 XOR 0, the result is 0. 1 XOR 1, the result is 0. 1 XOR 1, the result is 1. 0 XOR 0, result is 0. 1 XOR 1, result is 0. So what is the answer? The correct answer is the 4. The correct answer is 4. So in this way you can actually apply the XOR operation. Okay. Suppose if you have the two numbers, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, देखो एक सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है, एकदम सिंपल ही होता है लेकिन पूछते कैसे? देखो दो वेरिएबल्स है. सपोज देयर आर द टू वेरिएबल्स A and B. You don't know value of A and B. Okay. दो वेरिएबल्स है. फर्स्ट वेरिएबल इज A, सेकंड वेरिएबल इज B. नाउ यू नीड टू चेक दिस टू वेरिएबल इज हैविंग द सेम वैल्यू और नॉट. ओके, क्या करना है? हमें चेक करना है कि दोनों में सेम वैल्यू है कि नहीं.
बट डोंट यूज इक्वालिटी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आपको यूज नहीं करना है। ओके, ये ऑपरेटर यूज नहीं करना है और आपको चेक भी करना है ये दोनों में सेम वैल्यू है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए एकदम सिंपल है, हम क्या करेंगे, ए XOR बी करेंगे। इफ ए XOR b give the result as true, if the a XOR b give the result as false, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे if a XOR b, तो इसको नॉट कर देंगे, if not of a XOR b, और सिंपली इसको ये नॉट कर देंगे नॉट। if not of a XOR b, then you can print same, you can print the same, or else print not same, print the not same, very simple program। अब ये क्या होगा, अगर a XOR b करता हूं, अगर वो सेम है, ओके, अगर वो सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। ओके, a XOR b है तो रिजल्ट क्या आएगा, इट इज 0। अगर 0 है तो क्या करना है आपको, उसका नॉट बनाना है, तो नॉट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नॉट ऑफ 0 इज ट्रू, सो ट्रू मींस दिस इफ कंडीशन गेट satisfied and the same will be get printed। Okay, so using the XOR operation actually you can check the equality also। Okay, there are lots of way actually to solve this problem, it is not a only way, सिर्फ example देना है यहाँ पे। So got it this, and one more bitwise operator is remaining and that is the complement operator, complement operator। Okay, so there is a prize for this question, just listen carefully, those who are giving the right answer, first answer right answer, he or she will receive the prize money। Okay, so if a is equal to 9, if a is equal to 9 and b is equal to not of a, if b is equal to not of a, what is the value of b? Okay, you have 1 minute only, just those who know the answer, okay, 9 5 minus 9, okay, so I got that 2 answer correctly and 3 answers actually, these 3 people are giving the answer correctly। first one is the Khushwant Waikode, Khushwant Waikode has given the first correct answer, second one is the Vishal Chaudhary। Okay, Khushwant Waikode and Vishal Chaudhary, congratulations। So these 2 people are giving the correct answer, so what is the correct answer? The correct answer is the -10, correct answer is -10, but how it is coming, how the answer is -10? ओके, तो कैसे करेंगे, तो आपको सभी को मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 9, ओके, अभी a 9 है, उसको क्या करना है, हमें एक वेरिएबल स्टोर करना है और उसको नॉट ऑफ a करना है, नॉट ऑफ a। तो नॉट मतलब क्या होता है, अभी 9 ये बिटवाइज है, तो बिटवाइज क्या करता है, व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेशन? द बिटवाइज ऑपरेशन मतलब जो भी करना है वो बिटवाइज करना है। तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट दैट 9 इनटू द बाइनरी। तो 9 है तो कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो ये हो गया आपका 1001, बाकी के इधर के सभी हो जाएंगे 0। सो हाउ मेनी zeros आर देयर हियर? टोटल 32 zeros।
total 32-bit number is there. Here all numbers are the total 32-bit number. So the remainings are 0, but 0 we don't know, we know that this 0 is not having any meaning, so we are not writing here. The remaining we are not writing here, but the last 4 bits, we know that last 4 bits is the 1001. 1001. Got it? Now the next one is we need to do the not of a. Not of a करना है. अभी not of a मतलब क्या करना है? जो भी 1 है ना इसको 0 करना है, जो भी 0 है उसको 1 करना है. तो एकदम सिंपल हो गया. तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 1 1. तो बाकी के सभी कितने हो जाएंगे? All are 1. The remainings are all are 1. सभी कितने हो गए? तो 32 bits are there. Total 32 bits are there. तो लास्ट के 4 बिट देखो आप यहाँ पे, तो सभी के MSB भी क्या होगा? दिस MSB bit is also 1. MSB, that is most significant bit, is 1 here. Most significant bit is 1. Now this is you are stored into the B. आपने ये जो नंबर है ना वो किस में स्टोर किया? आपने B में स्टोर किया. अगर ये B में स्टोर करते हो एंड इफ यू आर एक्सेसिंग दैट B, अगर B को आप एक्सेस करते हो तो क्या होगा? If you are accessing this B, then actually what happened? तो यहाँ पे एक रूल होता है बाइनरी में, if the MSB is 1, if the MSB is 1, it means that this number is the negative number. This number is the negative number. Okay, ये जो लास्ट वाला जो अगर 1 होता है ना, ये आप बोल सकते हो कि इट इज अ नेगेटिव नंबर. अब ये नेगेटिव नंबर है तो कौन सा नेगेटिव नंबर है फाइंड आउट करना है. व्हाट इज दिस नेगेटिव नंबर? अगर ये नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ये जो नेगेटिव नंबर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव नंबर कौन सा है. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाउ दैट नेगेटिव नंबर इज रिप्रेजेंट इन अ computer. How the negative number is stored in your computer? So I'll remember that negative number is stored in computer in its 2's complement format. क्या करते हैं? कोई भी नेगेटिव नंबर होता है ना तो उसको कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाता है? 2's कॉम्प्लीमेंट में. तो इसके 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर हमें निकालना पड़ेगा. तो ये जो नंबर है ना ये नेगेटिव नंबर है लेकिन ये 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर है. तो इसको अगर ये 2's कॉम्प्लीमेंट है तो उसका अगर नंबर ओरिजिनल नंबर हमें चाहिए तो मुझे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. ये जो नंबर है ना इसका 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर हमें लेना पड़ेगा. तो ये नंबर कैसे लेंगे? तो 2's कॉम्प्लीमेंट, एनीवन नो द 2's कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू कैलकुलेट 2's कॉम्प्लीमेंट? तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होता है. तो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? सिंपल 1 0, ऑल 1s आर रिप्लेस्ड बाय 0 and the zeros is replaced by 1. This is the 1's complement. This is the 1's complement. And to get the 2's complement number, just we need to add 1. We need to add 1 inside it. तो अगर ये 1 ऐड करूंगा तो 1 plus 1 हो जाएगा 0 with carry 1. 0 plus 1 1, ये 0 ये 1, बाकी के सभी के क्या हो जाएगा? It is 0. Now this is nothing but your 10. 1 0 1 0 is nothing but your 10. But we know that this is the negative number. So that's why you can say that this is my -10 number. This is the -10 number. So remember that if you are any number in your variable having which is having the MSB bit as 1, then you can say that that is number is a negative number. और वो नंबर कौन सा है अगर वो फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो नंबर का हमें पहले 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसके बाद में उसको +1 करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे. ओके, वन मोर एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे शुभम बोल रहा है टेक अ वन मोर एग्जांपल. बट इफ यू नो दिस ट्रिक एक्चुअली वी कैन डायरेक्टली टेल द आंसर. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला कि व्हाट इज द इफ a इज इक्वल टू 13, if a is equal to 13 and what if I am doing
negation of A, what is the answer? What is the B contains? A में 13 है और B में नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा? तो एकदम सिंपल आंसर, वी कैन डायरेक्टली टेल द आंसर एज -14. ओके, विदाउट कैलकुलेटिंग. ये तो ट्रिक हो गया, लेकिन हमें इसका मेथड भी पता होना चाहिए. ये ट्रिक है, जो भी नंबर पॉजिटिव नंबर है उसको 1 से बढ़ा दो और वो माइनस कर दो, यू विल गेट आंसर. ओके, बट दैट इज ओनली ट्रिक, but you should know the what proper procedure to calculate it. So 13 मतलब क्या हो गया? What is 13? 13 हो गया आपका 1 8 4 2 1. तो 13 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हो गया 8 प्लस 4 और ये 1, ये हो गया आपका 13. ये मेथड पता है ना सभी को, 8 4 2 1 वाला बाइनरी का, हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी. यस, एकदम सिंपल होता है. तो क्या करना होता है? ये 13 है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो सबसे पहले लार्जर वाला 1 लिख दो, उसके बाद में 4 पर 8 प्लस 4 12 हो गया, और लास्ट में 1 बाकी है तो 1 हो गया. तो बाकी के जो भी नंबर यूज नहीं होंगे उसको 0 कर देंगे. एकदम सिंपल है. तो बाकी के तो ये हो गए 0. ओके, तो ये हो गया ए. उसको नॉट ऑफ ए करना है तो नॉट ऑफ ए कर दो आप, ये हो गए ए. तो नॉट ऑफ ए हो गया आपका सभी के 1 1 1 1, और ये हो गया 0 0 0 0 0 1 0. तो ये हो गया आपका नॉट ऑफ ए. ओके, तो ये नॉट ऑफ ए ना, तो ये हो गया बी. तो बी का वैल्यू ये एमएसबी. व्हाट इज एमएसबी? एमएसबी इज द 1, सो दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि ये नेगेटिव नंबर तो है, लेकिन कौन सा नेगेटिव नंबर है. फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट. So ones complement, how to get one complement? So all the ones are replaced by zeros, and zeros is replaced by 1. Zeros is replaced by 1, and then after that calculate the 2's complement. Calculate 2's complement. 2's complement can be calculated by adding 1. So 1 plus 1, 0 with carry 1, 0 plus 1 1, 0 0 0 0 0 0 0. Not 0 here, it is 1 and 1. Okay, it is 1 and 1. Okay, so 1 is as it is 1, 1 is as it is 1. So what is this answer? It is 8 plus 4 plus 2. 8 plus 4 plus 2 कितना होता है? It is 14. So it is 14, and we know that it is a negative number, so the answer is minus 14. The answer is minus 14. So is it important one? Are you thinking that it is a very important? Just if you're thinking that this is very important to your academic, then just type important, very important. Okay, so we'll start the next topic. The next topic is the decision control structure. Decision control. Now decision control we already have seen in a C language. The same thing is available in your Python. So very first thing is the if. How to use if statement? You know that. What is the use of if? If you want to execute a particular statement depending on the condition, if the condition is true, then only you want to execute the statement, then you are using if statement. जो C का जो फंडा है ना, वही फंडा इसमें है. तो सबसे पहले हम करेंगे if. उसके बाद में यहाँ पे देना पड़ेगा condition. Now you know that how to do the condition, how to give the condition. The condition you can give by using the relational operator. Okay, suppose there are two variables A and there are the second variable as a B, and if you want to compare it by using A greater than B, A greater than B, then you can actually make a condition. Now you can give here the bracket, or if you are not giving the bracket, then it is also okay. It is also okay. Okay, let's actually I will clear the thing regarding to the network. Okay, network च्या बाबतीत मी हे बघा आज वायफाय चा प्रॉब्लेम झाला इथे फायबर कट झाल्यामुळे, तर मी माझं जे सेशन आहे ते मोबाईल नेटवर्क वरून कनेक्ट केलेलं आहे. मोबाईल नेटवर्क वरून कनेक्ट असल्यामुळे
तुम्हाला थोड़ा प्रॉब्लेम येणार आहे, but recording of this session is available. You can check out if there is a voice problem or if there is a video problem on your end, then you can check the recording after this session. ओके, बट लेट्स टेक द टुडेज सेशन. तुम्हाला जे काही असेल ते तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये सगळं भेटणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला जेवढं तुमच्या एंडला जेवढं पोहोचताय तिथपर्यंत तुम्हाला समजण्याचा प्रयत्न करा. नाही समजलं आपण परत एकदा रिपीट करूया. पण आजचं सेशन आपण आज कंप्लीट करूया. आज फार तर एक काम करूया की आज आपण थोडं 11 वाजेपर्यंतच घेऊया. ओके, नेटवर्क प्रॉब्लेम मुळे. ओके, सो your if a greater than b, no, a greater than b, this is the condition. Now in C language this giving the bracket is compulsory. Giving the bracket is compulsory, but in Python actually the giving the bracket is not compulsory. This is the very first important difference between the C language if and the your Python if. Okay, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे. उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दी, यहाँ पे आपको देना है लास्ट थिंग, आपको कंडीशन के बारे में देना होता है कोलन. यहाँ पे आपको देना होता है कोलन. दिस कोलन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज नॉट अ सेमीकोलन, इट इज ओनली द कोलन. ओके, अब ये कोलन क्यों देते हैं? ये कोलन क्यों देते हैं? बिकॉज देयर इज नो ब्लॉक, देयर इज नो ब्लॉक प्रेजेंट इन योर पाइथन. पाइथन में ऐसे कोई कर्ली ब्रैकेट अवेलेबल नहीं है कि कर्ली ब्रैकेट डिफाइंस दैट दिस इज द एक्चुअली स्टेटमेंट्स ऑफ इफ. ये इफ के स्टेटमेंट है. ये सी लैंग्वेज में हम क्या देते हैं? अगर मोर देन वन स्टेटमेंट इफ देयर इज इंक्लूडेड, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग दैट स्टेटमेंट इनटू द कर्ली ब्रैकेट्स. लेकिन यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट होते नहीं है ब्लॉक डिफाइन करने के लिए. तो हमें क्या करना होता है? ये जेपी इफ योर इंटरप्रेटर रिसीव द कोलन, इट मींस दैट द बिलो स्टेटमेंट, इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट हो गए विद द वन टैब. टैब होता है अपना, जितने भी स्टेटमेंट, इसके नीचे के जितने भी स्टेटमेंट आप टैब दे के लिखेंगे ना, दैट इज स्पेस इज नॉट देयर, टैब. ये टैब इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट विद दिस टैब, देन दैट स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड for in this if statement. It means that this tab represent, it is a block. The tab represent the block. और ये टैब दे के लिखे, ये करने के लिए हमें ये कोलन इंपॉर्टेंट है. अगर ये कोलन देते तभी कंपाइलर समझता है कि आगे वाले जो स्टेटमेंट जो ब्लॉक अपने टैब दे के लिखे है, जो टैब दे के लिखे है, वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट इफ के हैं. सो वो इफ देयर इज ओनली टू स्टेटमेंट्स आर देयर और नेक्स्ट स्टेटमेंट यू आर राइटिंग विदाउट टैब, सो इट मींस दैट दिस प्रिंटफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट. अगर आपने यहाँ पे लिखा है सपोज प्रिंट हाई एंड प्रिंट बाय, and here you are printing here suppose hello. So it means that now only two statements are the related to the if. Okay, ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आया ना हेल्प, इसमें इसके आगे टैब नहीं दिया है. अगर टैब नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि इफ के अंदर का स्टेटमेंट नहीं है. अगर इसको अंदर करना है तो हमें इसके आगे एक टैब देना पड़ेगा. दिस टैब इज नोन एज अ इंडेंट. The tab is known as a indent. This indent defines the your block of your any conditional statements here. Got it? So here indentation is a very important in your decision control structure as well as in your loop control structure of your Python. ये क्यों देना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉक डिफाइन नहीं होता. There is no curly bracket is defined. Okay? तो एक तो हम क्या करेंगे, एक तो टैब देंगे और you can give the 4 spaces. 4 spaces is also allowed in some compiler. कोई compiler में different यहाँ पे कोई 4 spaces is also allowed, but some are actually needed the tab. So giving the tab is a better practice. Okay, so I'm writing one example here. If a greater than b, then colon, and then print high. So this is the one of the your example
one of the example of your decision control structure. But this is the only if statement. If the condition is true, it will execute. If the condition is not true, it will not execute. Suppose मुझे ऐसा करना है कि कंडीशन ट्रू है ना तो हाई एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स है तो बाय एग्जीक्यूट करना है. तो क्या करूंगा मैं, आई वांट टू इंक्लूड द एल्स पार्ट हियर. तो मुझे एल्स पार्ट करना पड़ेगा, लेकिन एल्स के आगे भी यहाँ पे क्या आएगा, कोलन ही आएगा. एल्स के आगे कोलन, इसके बाद में प्रिंट एंड बाय. ओके, तो एकदम सिंपल है. देखो, इफ द कंडीशन इज ट्रू, हाई गेट एग्जीक्यूट. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, by get executes. Very simple one. But if you are writing this code, actually just make sure that you are writing this with the colon here. This colon are very important thing. Got it? Got it? Yes. Okay, but next one is again how to write the if else if ladder. If else if there is one actually statement present in your C language, that is if else if ladder. So how to write that if else if in your Python, we'll see here. Suppose if there is a marks is there, marks variable is there, and if I want to check that how many marks your student has getting, then you are writing marks is, if the marks is greater than or equal to 60, if the marks is greater than or equal to 60, then I am printing first division. Okay, if the marks is greater than 60, then first division. Suppose if I want to check again the second condition, अगर second condition भी check करना है, second condition check करने के लिए मैं करूँगा यहाँ पे elif. ओके, यहाँ पे else if नहीं होता, यहाँ पे होता है elif. ओके, elif करूंगा और उसके बाद में मैं करूंगा marks is, if the first is false, then it will go to the checking the next condition. लेकिन एक second condition कब check करता है, अगर first false है तभी check करता है. If the first is false, then it will go to the second one. It is 50, then colon, and then after that again print statement. It is the second division. We can put one more elif. If the marks is greater than or equal to 40, then print pass only. Okay, he is only getting pass, कोई division मिला ही नहीं. And the last one is else. Last is else. Print fail. If the students are getting less than 40 marks, then it will go to else. तो देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट ट्रू हो गया तो बाकी के कंडीशन चेक ही नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट फॉल्स है तो नेक्स्ट आएगा. अगर नेक्स्ट ट्रू हो गया तो बाकी के कंडीशन चेक ही नहीं होंगे. ओके, सो if and elif, actually there is no such a big things for learning this, but you need to only see the syntax of this, how to write else if here. You don't have to write here else if, we have to write the elif here. Okay, if there are two conditions are there, and if two condition if you want to check at the same time, actually yesterday I have taken that point. If A greater than B and if A greater than C, then print A is greater. Elif, if B greater than A and B greater than C, then print B is greater. Else, you can directly put it, print C is greater. Or you can even check here one more condition. If C is greater than A and C is greater than B, then the C is greater.
Okay. Okay. So here one more thing, as actually we have seen in your C language, we can have the nested if also. Nested if means if A is greater than B, if the condition is true. If the condition is true and if you want to execute, if the condition is true, then you want to execute the, if you want to check the another condition, A greater than C. If A greater than B, if the condition is true, then it will go inside, and again you are checking if A greater than C, then you are printing here. Print A is greater, else print C is greater. C is greater. Okay, so that this is known as a nested if. So you can write the if inside if. If you write inside the if, then you can say that this is the example of the nested if. Got it? Yes. Okay, now next one is the loop control structure. Loop control structure. So there are the two types of loop present in your Python. Very first one is the while loop. Second one is the for loop. While and for. So while you know that how to execute, how that while get execute and when to execute loop, actually we already discussed. While means if you want to execute a particular statement repeatedly, then you can use the loop. Just like for example, if I want to print 10 times, if I want to print 10 times, okay, 10 times I want to print. So how to print? Use while I less than or equal to 10, I plus plus and I is equal to 1. So is it correct code? I equal to 1, I less than or equal to 10 and print 10. So the output is the at every line actually you are getting the 10 here. Okay, 10 times 10 you will get output here. So very simple one. Now again one more difference is there. Here you need to put here tab here in front of this, actually all the statement that you want to include inside the loop, you need to put here actually tab in front of that statements here. So very simple. While loop is very similar like your C language and C++ language. But what is the difference that I am taking? Because while loop there is no such a difference. Bracket is not required. Bracket is not required means actually bracket is not written. Instead of bracket, we are putting the tab in front of all that statement that you want to include inside your loop. Got it? So that tab is represent, it is an indent. Okay, so the next one is the for loop. Now for loop is actually the loop that you have to learn in your Python. It is not the same loop that you are using in a C language. So how to use the for loop we will see. Okay, the same problem I want to execute. So very first is suppose print 1 to 10. Very simple. We'll start with the basic. Print 1 to 10 using the for loop. If I want to print 1 to 10 using the for loop. So how to use it?
सो आई एम यूजिंग फॉर. सबसे पहले क्या लिखना होगा? फॉर. नाउ दिस गिविंग ब्रैकेट इज कंपलसरी, नॉट कंपलसरी. ओके ओके, कंपल्शन नहीं. यहाँ पे ब्रैकेट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखा तो कोई टेंशन नहीं है. तो मैं यहाँ पे दूंगा इफ, for not if, for I in, there is a operator, in operator is there, it will check the every possible value in front of, इसके आगे जो भी लिखा है ना उसके हर पॉसिबल वैल्यू के लिए आई ट्रू होता है. तो इन, तो इन यहाँ पे क्या देना होगा? तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? 1 to 10. मुझे वैल्यू क्या चाहिए? 1 से लेके 10 तक चाहिए. तो मुझे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक वैल्यू क्रिएट करने के लिए देयर इज वन फंक्शन नेम एज अ रेंज फंक्शन. यहाँ पे एक फंक्शन होता है रेंज. ये रेंज क्या करता है? इट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स having the values starting from 1 to 10. starting from 1 to 10. तो बोलोगे सर 1 to 10 बोल रहे हो लेकिन आपने 11 लिखा. तो कल ही हमने आपने देखा है कि अगर आप 1 और यहाँ पे लास्ट देते हो, दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस नोन एज स्टार्टिंग इंडेक्स. लेकिन ये क्या होता है? ये जो इंडेक्स होता है लास्ट इंडेक्स 11 होता है, दैट 11 इज नॉट इंक्लूडेड, इसके आगे वाला होता है. मतलब ये 10 इज इंक्लूडेड. मतलब क्या है? 11 के लिए फॉल्स होगा. तो 11 के लिए फॉल्स होगा तो ये होगा आपका 10. मतलब आप 1 to 10, अगर आपको 1 to 10 का रेंज चाहिए तो आपको देना पड़ेगा 1 to 11. आपको 1 to 20 देना है तो आपको देना पड़ेगा 1 to 21. सो यू कैन से दैट हियर दिस इज नथिंग बट योर फॉरवर्ड इंडेक्स. ओके, जो इंक्लूड नहीं करते वो. ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 1 से लेके 10 तक. ये हो गया रेंज. इफ यू आर डायरेक्टली प्रिंटिंग रेंज, आपने रेंज 1,11 इस तरीके से प्रिंट किया, सो यू विल गेट आउटपुट लाइक 1, 2, 3, 4, अप टू 10 एंड इट इज नथिंग बट योर लिस्ट. गॉट इट? तो ये लिस्ट में आएगा. यहाँ पे मैं यहाँ पे दूंगा रेंज 1,11. तो फॉर आई इन रेंज, इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन रेंज, for every value of I in the given range, actually I am iterating this particular loop. So how many iterations are there? It will decided by this range. So total possible values are 1 to 10. Oh, mobile or chalo. 1 to 10 here. Got it? So what I want to display here? I. So first I will put here one tab. यहाँ पे एक मैंने टैब दे दिया. उसके बाद में I प्रिंट करना है तो एकदम सिंपल है, मैं यहाँ पे I लिख दूंगा. तो हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट. तो फॉर I इन रेंज 1 to 11 प्रिंट I. चलो ये हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बिकॉज एक भी प्रोग्राम आज हमने एग्जीक्यूट करके नहीं देखा. Okay, are you able to see this screen? स्क्रीन दिख रहा है आपको सभी को? यस. ओके, तो देखो वही प्रोग्राम करते हैं जो हमने अभी किया. सबसे पहले तो देखो आपका जब टाइप करते हो, ओके, व्हेन यू आर टाइपिंग योर प्रोग्राम पाइथन में, सबसे पहले स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? सबसे देखो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे स्पेस देते हैं, उसके बाद में ऐसे टाइप करते हैं. तो कभी भी याद रखना है कि यहाँ पे स्पेस नहीं देना है. ये स्टार्टिंग है तो आपको जो भी स्टार्ट करना है वो एंटर देके या कुछ भी स्टोर, ये एंटर देके स्पेस नहीं देना है. तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, स्पेस देके मैं यहाँ पे फॉर करूंगा ना, सो यू आर while compiling your program it will give error. तो क्या करना है? डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेज. सो फॉर आई इन रेंज, आप देख सकते हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है फॉर और इन का. सो दीज आर नथिंग बट योर कीवर्ड्स 1,11 और यहाँ पे मुझे करना है प्रिंट और यहाँ पे आई, प्रिंट आई. सेव करता हूँ.
रन करेंगे, जैसे मैं रन करूंगा तो आउटपुट आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लेकिन ये क्या आया, ये हर लाइन के ऊपर मतलब नया लाइन के ऊपर आया। सो इट मीन दैट print will give the end line after printing whatever it is written inside that print statement। ओके, तो हम उसको ओवरराइट भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एंड स्लैश एन नहीं चाहिए, मुझे एंड जो है ना वो मुझे स्पेस चाहिए। ओके, it means that for after printing this I, just put space, do not put the slash n। by default slash n होता है, slash n मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। अभी हमें क्या करना है, हमें, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, end should be the space only, end should be the space only। तो मैं करूंगा यहाँ पे, फिर से रन करूंगा। so your answer you can say यार it is a horizontal output। वन हुआ प्रिंट, उसके बाद में स्पेस आया, टू हुआ प्रिंट, उसके बाद में स्पेस आया, 3 के बाद में स्पेस, 4 के बाद में स्पेस। फॉर एवरी, एक्चुअली फॉर एवरी आउटपुट द एंड इज द स्पेस हियर। okay, so it is a very simple technique actually। So actually what is my suggestion, most of the students are getting the problem voice break। okay, so what we can do actually, the problem is in my end only, because I'm connecting from the mobile internet, because the actually there is a no internet, Wi-Fi internet is not present in our office। so what we can do actually, we can end the session, because it is a very important point and you all need to understand this। we will again repeat the that is decision control structure and for loop, your loop control structure in Monday morning with the very good connection। but again मी एक तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुमच्या घरामध्ये पहिल्यांदा चेक करा, एक वेबसाईट येते बघा, इंटरनेट स्पीड चेक असं एक गुगल वरती टाकल्यानंतर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बघा कुठे सगळ्यात जास्त इंटरनेट स्पीड येतोय आणि नेक्स्ट टाइमला तिथेच बसायचं आहे, जिथे इंटरनेट स्पीड येत आहे तिथेच बसायचं आहे। आज तर प्रॉब्लेम नाहीये आज, कारण माझ्या एंडलाच प्रॉब्लेम असल्यामुळे, हा टुमारो इज हॉलिडे असं म्हणतंय, पण टुमारो इज नॉट अ हॉलिडे, टुमारो इज अ स्पेशल लेक्चर, इन्व्हायटेड गेस्ट आहे, त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना उद्याच्या लेक्चरला कनेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला खूप वेगळा एक्सपिरियन्स येणार आहे। उद्याचं लेक्चर आहे सायबर सिक्युरिटी वरती। ओके, उद्याचं लेक्चर सायबर सिक्युरिटी वरती आहे। आपल्या इथे नाशिक मध्ये अमर ठाकरे म्हणून आहे, सायबर सिक्युरिटी स्पेशालिस्ट, त्यांचं लेक्चर आहे। तर उद्या कोणी शक्यतो ऍब्सेंट नाही राहायचंय, रेकॉर्डिंग तर अवेलेबल करून देणार आहे मी, पण लाईव्ह ते जे काही डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवतात सायबर सिक्युरिटीच्या वेळेला ते तुम्हाला खूप उपयोगात येणार आहे। लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन सुद्धा दाखवतात, ते कोणत्या वेबसाईट हॅक होऊ शकतात, कसं काय हॅकिंग कसं चालतं ते पूर्णपणे ते सांगणार आहे। अँड होल सेशन इज इन युअर मदर टंग, इट माइट बी इन मराठी और इट माइट बी इन हिंदी। तर मग त्यामुळे काही प्रॉब्लेम तुम्हाला काहीच येणार नाही। तर उद्याच्या दिवशी सगळं मी ईमेल येऊन जाईल तुम्हाला, उद्या शक्यतो आपण दुपारून ठेवणार आहे। तर टायमिंग मी तुम्हाला ईमेलला समजेल, ज्या वेळेला तुम्हाला ईमेल येईल त्या वेळेला तुम्हाला समजेल की ते टायमिंग काय आहे। ओके, तर ज्यांचं ऍक्च्युअली रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे, ज्यांचं कन्फर्मेशन झालेलं आहे, त्यांनाच आता तुम्हाला माहिती असेल त्यांनाच ईमेल येतो आहे। असे काही असतील की ज्यांचं कन्फर्मेशन झालंय त्यांना ईमेल येत नाहीये, त्यांनी लवकरात लवकर कॉन्टॅक्ट करायचे, त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्यायचे आहे। तुम्हाला काही झूम प्रॉब्लेम असेल, झूमच्या रिलेटेड प्रॉब्लेम असेल, काही तुम्हाला लॉग इनचा इश्यू असेल, तर तुमच्या मित्रांना असेल त्यांना सुद्धा मदत करा तुम्ही, कारण तुमचं एकदा तर साइन अप झालाय तर तुम्हाला प्रोसेस माहिती आहे, तुमच्या मित्रांना सगळ्यांना तुम्ही मदत करायची आहे। तर उद्या आपण परत भेटूया।
with the very eminent personality, that is Amar Thakre, and the topic is the cyber security. Okay. Guruvarya तुमचा registration चालू आहे. Some of you might have received the its username and password, but it is a very actually big mob, so that's why प्रत्येकाचे रजिस्ट्रेशन क्रिएट करायला थोडा वेळ लागतो आहे. त्यामुळे तुम्हाला ज्या वेळेला ईमेल आला त्याला समजून जायचं आहे की तुमचं जसं ईमेल आयडी आणि ईमेल आयडी हा तुमचा युजर नेम असेल आणि पासवर्ड तुम्हाला तुमच्या ईमेल मध्ये येऊन जाईल. त्या ईमेल ऍड्रेस आणि पासवर्ड घेऊन तुम्ही guruvarya.com या वेबसाईटला तिथे व्हिजिट केल्यानंतर लिंक जर तुम्ही मागत असेल तर यू कॅन चेक इट guruvarya.com. ओके, याच्यावरती गेल्यानंतर तुम्हाला त्याचे लॉग इन क्रेडेन्शियल जिथपर्यंत नसणार तिथपर्यंत तुम्हाला लॉग इन नाही करता येणार. आता कमीत कमी त्याच्यावरती 12 कोर्सेस आलेले आहे ऑनलाईन, 12 कोर्सेस ऑनलाईन आहे. तरी आम्ही जास्तीत जास्त कोर्सेस आणण्याचा प्रयत्न करतोय. सो हे जे बेसिक आपलं चालू आहे आतापर्यंत ते सगळ्यांनी रिव्हिजन करायचं आहे. मी तुम्हाला ओके 1 मिनिट फक्त चालू राहू द्या. मी तुम्हाला एक काम करतो, गुगल ड्राईव्ह मी तुम्हाला एक पीडीएफ देतोय आता पायथॉनची. Okay, but again it takes time actually for uploading the because it is a very big file. तर मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चर मध्ये मीनवाईल लेक्चर ज्यावेळेला स्टार्ट असेल त्यावेळेला तुम्हाला पायथॉन चे एक पीडीएफ तुम्हाला देणार आहे. ती एक लिंक असेल, ती लिंक वरती जसं तुम्ही क्लिक केला, व्हेन यू क्लिक ऑन दॅट लिंक ऍक्च्युअली दॅट पीडीएफ गेट स्टार्ट डाउनलोड. इट इज स्टोर्ड इन युअर गुगल ड्राईव्ह. मग आणि ते पीडीएफ वापरून तुम्ही मग त्यामधून स्टडी करायचं आहे. ओके, तर आज आपण इथेच थांबूया कारण भरपूर लोकांना प्रॉब्लेम येतोय व्हॉइसचा आणि व्हिडिओचा. तर अजून हे जे आजचं जे लेक्चर झालंय त्याची परत एकदा रिव्हिजन आपण सोमवारी घेऊया, क्विक रिव्हिजन घेऊया, 15 मिनिटांमध्ये संपवूया. आणि नेक्स्ट जो पार्ट आहे आपला ऍडव्हान्स पार्ट आहे. आय थिंक द ऍडव्हान्स पार्ट इज द फंक्शन, मॉड्यूल्स अँड द पॅकेजेस अँड द डेटा स्ट्रक्चर that we are conducting in the Monday morning. Data structure is very important. त्यामध्ये तुम्हाला जर पॉसिबल असेल तर हे 3 गोष्टी तुम्ही वाचून ठेवायच्या आहे. लिस्ट, डिक्शनरी, टपल आणि सेट. हे 4 गोष्टी तुम्ही सगळ्यांनी वाचून ठेवायचे की या काय आहे. जर वाचून ठेवलं तर तुम्हाला नक्की हे व्यवस्थित समजणार आहे. दीज आर द ऍडव्हान्स डेटा स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन युअर पायथॉन. ओके, तर आजचे जे विनर आहे खुशवंत वायकोडे आणि विशाल चौधरी. ओके, मागचे ही तुमचे जे आहे सरांनी सांगितलं होतं, मागचे जे विनर्स आहेत त्यांना गुगल पे ला हाय करायला सांगितलं होतं. त्यांनी जर केलं नसेल, सगळ्यांनी केलं असेल तरच त्यांचे प्राइज भेटणार आहे. आजच्या विनरला सुद्धा तो प्राइज भेटणार आहे. तर खुशवंत वायकोडे आणि विशाल चौधरी जस्ट सेंड हाय on your on the that Sudhir sir mobile number, WhatsApp number. Okay, or otherwise if my number is there then you can send your WhatsApp number to me. Okay, माझा नंबर मी ते शेअर करतोय 7588615326. ओके, ह्या नंबरवर एक मिनिट ऑन पॅनलिस्टला गेला. ओके, 7588615326. ओके, तर ह्या नंबरला सुद्धा तुम्ही हाय करू शकतात किंवा व्हॉट्सअपला तुमचं डिटेल पाठवा. मग विशाल चौधरी आणि खुशवंत वायकोडे. ओके, तर आजचं सेशन आपण आज इथेच एंड करतोय. उद्याचा सेशनचा जो ईमेल आहे ते तुम्हाला मिळेल सकाळी. तुम्हाला 8 वाजेपासून तुम्ही ईमेल चेक करायचा आहे. उद्याचं सेशन उद्याच मी प्लॅन करणार आहे.
त्यामुळे 8 वाजेपासून तुम्हाला ईमेल यायला सुरुवात होतील. ओके, आज ईमेल येणार नाहीये तुम्हाला, उद्या येणार आहे. ओके, थँक्स.